So, doctor, you spoke about the first stage or the milk teeth. So, how important are milk teeth? So usually we see, we spoke about the foods also, sugary substances. So, a lot of like kids obviously have all of these, cold drinks and all of these foodstuffs. So, जब उनके मिल्क टीथ खराब होते हैं, there is a tendency that parents leave it saying कि वो anyways गिरने वाले हैं. So, is it okay to leave decayed milk teeth until they fall? See, milk teeth comes at the age of 6 months. Start from the 6 month up to 2.5 years. So this is the area where this is the age at the with the two teeth ups, right? It's in the span of 2 years the two teeth ups. लेकिन जब उसका शेडिंग होता है, शेडिंग चालू होता है 6 साल से 12 साल तक. तो लास्ट जो शेड होता है जैसे सेकेंड डेसिडस मोला वो शेड लेता है वो निकल जाता है एट द एज ऑफ 11 to 12 years. So during this period आपको अगर डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो patient will land up in various conditions. Okay, so at the age of suppose at the age of 8 years patient को caries है और patient ने दांत निकाल दिया है, so जो permanent teeth आ रहे हैं that will cause an tilted effect या फिर it will not come in the oral cavity. So always the जो मिल के दांत रहते हैं that should be treated properly. So, what advice would you give a parent? How can they look For after? milk teeth, Yeah. मिल्क टीथ ना एट द एज ऑफ 2 years जब ओरल कैविटी में पूरे आ जाते हैं तो ट्राई टू देम क्लीन विद सम गुड ब्रशिंग टेक्निक्स और विद वार्म वाटर्स. तो पेरेंट्स को खुद ब्रश करना चाहिए या एटलीस्ट. और जब फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग रहता है तो नाइट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना चाहिए. ये 50% ऑफ द केसेस जो हमारे पास में आती है रेसिड्यूज टेस्ट के केरीज के दैट इज कॉल्ड एज नर्सिंग बॉटल केरीज. ओह, सो दिस इज नर्सिंग बॉटल केरीज बिकॉज ऑफ लेट फीडिंग लेट नाइट. और लेट बॉटल फीडिंग. सो जो दूध रहता है या मिल्क रहता है जो ओरल कैविटी में स्टक रहता है होल नाइट. जो मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन द मिल्क. सो ओवरनाइट जब पेशेंट के ओरल कैविटी में मिल्क रहता है दैट विल कॉज द इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी और द टीथ एंड टूथ विल गेट डिकेड. सो मल्टीपल टाइम्स हमको हमारे पास में जब पेशेंट्स आते हैं डेज टू डेज टूथ के साथ 12-12 टीथ केरीज रहते हैं एक साथ में. दिस ऑल बिकॉज ऑफ नर्सिंग बॉटल केरीज. तो रैम्प दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैम्पेंट केरीज. एंड व्हाट आर सम ट्रीटमेंट ऑप्शंस एट दिस एज फॉर चिल्ड्रन? हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को पीट एंड फिशर सिलेंट करने के लिए फ्लोराइड एप्लीकेशन करने के लिए. क्या? फ्लोराइड एप्लीकेशन ताकि आपका केरीज के लिए प्रॉब्लम ना हो. डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना है हमको पेशेंट का तो उसके लिए हम टीथ के ऊपर एक लेयरिंग कर देते हैं फ्लोराइड लेयरिंग. ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लोराइड एप्लीकेशन. सेकेंड थिंग जहाँ पे भी डीप कैविटीज है या डीप फिशर्स है उसको हम बॉन्डिंग एजेंट लगा देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज फिशर. मीन्स फिशर यानी क्या होता है कैविटी एक नेचुरल कैविटी रहता है टीथ में तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं ताकि वहाँ पे कीड ना फॉर्म हो. And so, at what age should a parent take their child to the dentist? At Or the age of 3.5 years. 3.5 से Yeah, चालू होना चाहिए. yeah, And then from 3.5, 6 months yeah. should be You, constant. yes, cost 1.5 years. Every 1.5 year. Every 1.5 years. Yeah. And then फिर वो फिर वो जस्ट जैसे परमानेंट टीथ आते हैं एट द एज ऑफ 13-14 एवरी 6 months you have to visit. For deciduous teeth and the mixed dentition every 1.5 years and for permanent teeth every 6 months. ठीक है. So, समझ लो it's a part of your daily habit to clean your teeth or check your teeth. You should make it. Seriously. हाँ. If you respect your teeth, the teeth will respect you. It's a very simple thing. So, doctor, we spoke about kids, how to take care of oral health, kids में, बच्चों में, and adolescent stage पर, and then we spoke about permanent teeth. So, say for example, हम ये सभी चीज़ें करते हैं, like we do a routine health checkup, ये सब हम कर रहे थे. But then there is a particular age जब naturally our teeth start weakening. So, what is your take on what are the common problems जो eventually आते हैं with age? There's nothing called as tooth weakening. Okay. It's about you are not respecting your oral cavity इसलिए वो weak हो रहा है. जो दांत रहता है या teeth रहता है that is get supported with the gums and the bone. So meanwhile when the age passes आपका periodontium या gums रहता है वो weak हो जाता है. वीक होने के कारण वहाँ पे फूड डिपॉजिट हो जाता है. सो वंस द फूड कॉज डिपॉजिट इन द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ द टीथ वहाँ पे बोन लॉस होना शुरू हो जाता है. उसके बाद आपको टूथ वीक या फिर मोबाइल शुरू हो जाते हैं. सो टीथ का एक ही स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है वो बोन.
आप वो अगर बोन का केयर नहीं कर सकते तो इट विल टॉक रिजॉर्बिंग. वंस इट टॉक स्टार्ट रिजॉर्बिंग देयर विल बी मोबिलिटी और वीकनिंग ऑफ द टीथ. रिजॉर्बिंग रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन मीन्स बोन गल जाता है वहाँ का, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है. So it's some osteoclastic तो इट activity. टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ मच वन टेक्स केयर ऑफ I देयर टीथ। हाँ, मैंने काफ़ी 80s में भी पेशेंट देखे हैं, उनके टूथ फर्म है, बिकॉज़ दे आर रिस्पेक्टिंग देयर गम्स एंड द बोन्स और द टिश्यूज़. सो इट्स नथिंग कॉल्ड एज़ कि आपका टीथ वीकनिंग होता है विद द एज. इट्स हाउ बिकॉज़ हाउ यू यू टेक टेक केयर ड्यूरिंग योर एज. Okay. So, doctor, what are some common problems that come to you in patients who do not take care of their teeth? And where it goes to जहाँ पे आपको teeth निकालना पड़ता है और there is loosening as you said, you mentioned about teeth loosening. So many a times हम देखते हैं कि people have loose teeth और वो ऐसे ही छोड़ देते हैं. So is that okay? जब भी पेशेंट को लूज़ टीथ रहता है, यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल. लूज़निंग ऑफ टीथ मीन्स lacking of the bone in that area or the destroy of bone in that area. ठीक है. So in that case you have to do a proper periodontal treatment, that is called a flap surgery. Otherwise अगर आपका teeth hopeless condition में है, that means you can't prevent the teeth, just remove it and go for a replacement directly. In loose teeth. Loose teeth, Loose teeth में go for a periodontal flap surgery, splinting. If if the tooth is hopeless, not favorable, just remove it and go for an other alternative. तो आप सजेस्ट करते हैं we should not leave loose teeth. We should not leave loose teeth in the oral cavity. It is a dangerous thing. It will cause a gum disease. It will cause a swelling. It will cause a cyst. Also, it cause some sort of cystic lesions in that area, because that is called a periapical cyst or other cyst. Any mobile teeth will cause a increase in the infection in that area basically. We should always go and get it treated और उसको replace करना चाहिए। Mobile teeth होना ही नहीं चाहिए oral cavity में. That is the first principle of dentistry. Mobile should अच्छा, always get treated. if suppose हम loose teeth को ऐसे ही छोड़ देते हैं, so what are सबसे पहले उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहता है क्रोनिक, तो पेशेंट पेशेंट को हमेशा कोई ब्लीडिंग होता है, पस डिस्चार्ज होता है, बोन लॉस होता है. और इन स्टेज में जब वो दाँत गिरता है तो वहाँ पे बोन ही नहीं रहता है कुछ रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, या फिर कुछ इम्प्लांट, कुछ प्रोसेसेस डालने के लिए, इम्प्लांट्स डालने के लिए. तो अगर डिले करेंगे तो इम्प्लांट्स डालने के लिए भी नहीं होगा? नहीं, बहुत डिफिकल्ट रहता है मैम. यू हैव टू अगेन ऐड सम बोन, यू हैव टू डू अ ग्राफ्ट बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग एंड देन यू हैव टू प्लेस द इम्प्लांट. तो एक तो होता है लूज टीथ, देयर इज आल्सो अनदर कंडीशन ऑफ मिसिंग टीथ, मतलब वो द टूथ फॉल्स, तो उसको रिप्लेस करना क्या जरूरी है? Any missing teeth in the oral cavity is a disability for the human being, because उसका Disability. disability, yes. Missing teeth, आपके इसमें अगर missing teeth है apart from the wisdom tooth, that will cause some disability in your oral cavity. एक तो आजू बाजू के tooth shedding होता है, हाँ, वो pronunciation में issues होता है, mastication में issue होता है. So mastication, खाना खाने में difficulty आती है, chewing में difficulty आती है, pronunciation में difficulty आती है, anterior teeth missing रहा तो. So it's one of the disability in the oral cavity. So any missing teeth should get replaced as early as possible. Nowadays, there is recent innovation or recent trend. We are going with the replacement, like mimic like, means we are mimicking your teeth with the dental implants. Most favorable for your oral cavity is the biocompatible material dental implants. So what are some ways in which people can manage missing teeth or loose teeth, और जो जब जब रिप्लेसमेंट कर जब डेंटिस्ट्री शुरू हुई थी तो रिप्लेसमेंट वाज जस्ट विद द सम सॉर्ट ऑफ रिमूवेबल डेंचर्स. हाँ, So जो शुरू हुआ था रिमूवेबल डेंचर्स से, बट दैट रिमूवेबल डेंचर्स अगेन कॉजिंग एन इशू विद द एडजेसेंट टीथ. वो एडजेसेंट टिश्यूज और गम्स को, टीथ को भी डैमेज करते थे. तो व्हेन यू डेली आप रिमूव करते हो, पहनते हो, तो वो कुछ ट्रॉमा करता है आपके टीथ पे, या फिर फोर्स करता है टीथ को, तो उससे टीथ मोबिलिटी शुरू हो जाती है. गम्स को भी इरिटेट करता है. अगेन इट्स ए फॉरेन मटेरियल. So removable is not indicated for the patients so you nowadays. don't advise removable dentures? In very few conditions where we can't go for and fixed it, we advise for intermediate 4 to 6 months we advise the patient. हम जिंदगी भर के लिए पेशेंट को रिमूवेबल बताना अभी बंद कर दिया फ्रॉम लास्ट 15 years. टोटली बैन कर दिया है इन डेंटिस्ट्री. रिमूवल इज जस्ट फॉर ए टेम्पररी थिंग, नॉट फॉर द परमानेंट. Any removable prosthesis in the oral cavity will cause some damage to the teeth or the oral cavity. Simple. तो डेंचर्स के अलावा लाइक व्हाट आर द अदर रिप्लेसमेंट? उसके बाद में सेकंड स्टेज आता है आपका ब्रिज. ब्रिज मीन्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द अदर टिश्यूज और द अदर टीथ. उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगेन हमको बाजू के दांतों को मॉडिफाई करना पड़ता है. अगेन वी आर दिस टीथ आर प्रोन फॉर सेंसिटिविटी एंड द इन्फेक्शन.
So you can take support from the adjacent teeth and make a bridge. जो ब्रिज रहता है नॉर्मल, वैसे यू कैन मेक इट ब्रिज. बट अगेन आपके 2 दाँत पे 4 दाँत का सपोर्ट आता है, तो ब्रिज विल अगेन फेल आफ्टर 10 to 15 years. So again the we are stop giving him most of the bridges. So in few cases only where implants are not indicated, we'll go for bridges nowadays. So teeth replacement with bridge is also one of the thing which we are not following. Other thing, we can replace the teeth with the crown. So simple, if you have a teeth going for a root canal or for some food alignment, you can just modify that tooth, do the root canal and do the capping over that teeth. That is one of the simple thing we can do it for the teeth. So सबसे कॉमन है कि आपका दांत खराब हुआ है, उसका कैरीज निकालो, फिलिंग करो, फिलिंग से अगर होता है तो ठीक है, डिस्ट्रक्शन और टीथ का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसके ऊपर एक कवर कर दो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिंग. कैपिंग शुड बी ऑल्सो मेटल फ्री, शुड नॉट बी कंपोज ऑफ मेटल. So zirconia is one of the good material for the capping. It should not have metal. It should not have metal. What are the bad effects अगर हम Metal will always cause corrosive activity or the erosive activity. That is called as corrosion. Metal will always disintegrate. So So we need we need a thing that should be biocompatible. So metal free is always biocompatible than the metal. metal free? So Yeah. you mentioned zirconia. Zirconia is one of the good material. Yeah. Zirconia एक अच्छा material है the cap बनाने के लिए. अच्छा. So doctor, you said कि आप dentures recommend नहीं करते हो, like past 10-15 years Yeah. dentistry में you have stopped recommending dentures, और bridge को भी you know हर 10-15 साल में you said कि उसको replace करना पड़ता है. Correct. So what is the best tooth replacement option then that you would say? According to our scenario, what we recommend is the dental implants. Dental Mhm. implants एक biocompatible material है. It's a titanium material which will act like a root of the teeth. Support कोई भी दांत बिठाने के लिए एक framework चाहिए. So this implant is get inserted in the jawbone. It's like biocompatible titanium material. उसके ऊपर एक दांत फिट हो जाता है स्क्रू से या फिर सीमेंट से. It's very simple procedure, but that uh, implant what we are placing in the oral cavity or the jawbone, it will get osseointegrated, means वो फ्यूज हो जाता है बोन के साथ में और लाइफ टाइम वैसे ही रहता है अच्छा. अनलेस उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता. So it's as good as your permanent teeth. So अच्छा. that we call as third dentition nowadays. So Okay. third dentition is the fixed teeth what we give to the patient. Okay. So it will not damage it throughout your life. जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी like the LIC. So best. It's one of the best material or the best equipments or the best biocompatible uh, long lasting thing which is having in the dentistry, that is dental implants. So उसके risks कुछ है? See, in few medical compromise condition, with precaution you have to place it. हाँ. It's some sort of invasive treatment, but easier than the extractions. But once it implanted in the oral cavity, lifetime आपको कुछ नहीं करना है, just a maintenance part रहता है. हाँ. That's the thing. It's a titanium inert material. Nowadays अभी इतना advancement हुआ है implants में भी. Now implants are composed with various biocompatible bio generative materials. अभी जो implants आ रहे हैं वो सिर्फ टाइटेनियम के नहीं है, उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड का लेयरिंग किया जाता है, उसको सैंड ब्लास्टिंग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बोन फॉर्म हो गया और ज़्यादा जल्दी हो जाए. सो जो पहले हम 6 महीना 7 महीना वेट करते थे इम्प्लांट डालने के बाद कैप लगाने के लिए ताकि उसके अंदर बोन फ्यूज हो जाए इम्प्लांट के साथ में. बट नाउअडेज विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 years 2 months we can put the cap on the implanted teeth. Acha. And can all the teeth, like, is there any limit, or like all the teeth can be replaced with implants? And when there is too much loss of See ma'am, anything can get replaced with implants. So generally we do 14 implants, 18 implants, 12 implants and for the patients to get a fixed teeth. Single implant can be done, multiple implants can also be done. Anything can get replaced with the in the oral cavity with the dental implants. and what about the sensitivity? जब implant लगाते हैं, will the sensitivity जो हम बात कर रहे थे, will it Implants, remain? there will not be any sensitivity with the tooth. आपके sensitivity नहीं रहेंगी. But proprioceptus जो sensations रहते receptors है जो pulp में थे, that should not be with your natural teeth. But that should not be your implant teeth. It will be mimicking the natural teeth. हाँ. But sensations, Sensation proprioceptive sensations नहीं रहेंगे. So the pulp is removed और फिर implant No, we remove the teeth and then go for implant. implant भी entire. Yeah. Okay. So, doctor, we spoke about, you just mentioned a point where you spoke about medically compromised patients. So, are there any patients, what kind of patients, uh, that you can't do an implant? What There is nothing no in the implantology. We should know how to do it. That is the thing. In any medical compromise cases, you can do it, but there is certain time waiting time for that patient.
Like example, if the patient is having an radiation, onco cancer patient. So after radiation, we stop for 2 years to get his bone settled, and then we go for implant. This is one example. Second example, the patient is having a rheumatoid arthritis and is having some immunosuppressant drugs. रहता है. So we stop it for 1 month. अगर bisphosphonates orally है तो we stop for 1 year. If अगर IV है तो we stop for 3 years. There is nothing called as no. So medical compromise के दिन diabetes है तो we control the diabetes and place the implant. So अगर आपके बॉडी में फ्यूज होना है तो उसको हो जाता है. इट्स नॉट अबाउट इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी. इट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ बॉडी. देयर इज नथिंग नो फॉर द डेंटल इम्प्लांट्स, बट with proper precaution and proper type of implant you have to place it with proper aseptic precautions. So there is nothing no for the dental implant, but you should know how to do it. That is the more important. It's very precise science. It's a art and the science. So once you learn the art, fine arts, same with the implant. If you know how to place it, it's very easy. So there are many patients who also fear क्योंकि उनको अस्थमा होता है, बीपी होता है. So in that case, you have to just moderate your patient, educate your patient that this is not a life-threatening condition. It's very simple procedure. And you just monitor their vitals and ask them to use a supplement medicine at a time of during this minor procedure. It's a small surgical procedure. अच्छा. So it's not a contraindicated, but you have to take precautions while doing these procedures. Like if you want me to share, I can share you one case. You have many patients who want to eat, but inability to eat because of missing teeth. So there is one case, and we had operated few months back. Patient is having a tracheostomy, various life-threatening diseases, but since she was not able to chew, her body immune system was not going, her body health is not going. So she was advised that she should have it fixed teeth in her oral cavity. All the teeth were badly curious with toothpaste, and nothing was there to chew. So patient on bed on the wheelchair with the tracheostomy we operated, we had placed a 14 implant with the general anesthesia. Now that all implants are getting rehabilitated. That is now there is how the need of dental treatment or the teeth is nowadays. Not only for the cosmetic, it's for the mastication or the chewing or the digestion of the patient to increase the proper health of the patient. तो इम्प्लांट बिठाने से पहले एक्सट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट. सो व्हाट इज योर टेक ऑन एक्सट्रैक्शन? बिकॉज मेनी पीपल फियर एक्सट्रैक्शन नॉट ओनली व्हेन दे आर टूथ इज नॉट, I mean when they have to replace teeth, but also when we spoke about wisdom tooth extraction. So there is a fear behind extraction. So what are the effects or what are the risks जो that are there with extraction? Extraction अगर प्रॉपर्ली किया तो कोई रिस्क नहीं है. देयर इज जो कोई नथिंग. risk है. हाँ, इट्स नॉट एनी रिस्क, बट यू हैव टू identify your patient, what type of patient you are having. आपका अगर पेशेंट मेडिकली कॉम्प्रोमाइज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, तो यू हैव टू गिव सम सप्लीमेंट टू दैट पेशेंट. आपका अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो आपको पेशेंट को प्रॉपर्ली बीपी मेंटेन करना है. ड्यूरिंग योर एक्सट्रैक्शन है तो ब्लीडिंग होगा. आपका अगर पेशेंट डायबिटिक है तो प्रोफिलैक्टिक एंटीबॉडी देके शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा. अच्छा. So whatever the precautions you have to take, but it's not contraindicated to do the extraction unless there are few bleeding disorders where you have to control it. So any extraction has Any extraction can risk as long as uh, properly किया. properly किया जाता है. And nowadays after extraction we immediately do in the implant placement. Same visit में we will do the implant also. तो एक ही anesthesia में दोनों काम हो जाता है. So since we are talking about medically compromised patients, so such patients वो लोग clinic में नहीं जा सकते. So obviously would you recommend कि वो लोग hospital में जाके ये dental treatments कराएं rather than clinics, because if they are already medically compromised? See, I prefer जो भी medically compromised patients रहता है, don't try to do such these things in the dental private clinics. Go to proper hospital where everything is monitored. Not only your oral health, your systemic health is monitored. So there are few parameters. You have to check your all the vitals. You have to check any systemic condition is there. The patient has systemic condition. You have to involve others, physicians, all the surgeons in that. So that everything is in the pipeline. It should in the normal area. So that whatever things you are putting, that is implants or any restoration, or that will not cause any adverse effect. So even in order to prevent the secondary complications of the patient, उनको सेकेंडरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए. सो देयरफॉर वी ऑलवेज एडवाइज टू सच मेडिकल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट टू get treated in the dental OPD in the hospitals, so that all the fitnesses, all the other issues get sorted when you are doing the proper dental treatment. And the most common thing for the dental treatment should be you should have good sterilization. So you recommend कि whenever there is a fear or there are other medical conditions, it's okay to do any such dental procedure?
but it should be taken with more precaution. More precautions, yeah. तो सपोज किसी ने लाइक इम्प्लांट्स कराए हैं, सिंस यू आर सेइंग दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू डू इम्प्लांट्स, तो इम्प्लांट्स लगाने के बाद व्हाट आर व्हाट इज द केयर दैट नीड्स टू बी टेकन See, टू मेंटेन इट? dental implants are the artificial titanium teeth. Along with that, zirconia crowns रहते हैं metal free. So this is a single body or the multi connection area. So connection area पे you have to take care. You have to clean every 6 months, 1 year. You have to go for a dentist and clean that area if needed. There should not be any food accumulation in that area. If the patient is having some medical conditions like diabetes, so sugar should be monitored throughout its life because इसमें second infections हो गए तो that implant will get infected. फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है. So that you have to replace it. So you have to take care. अगर कोई भी foreign body के अंदर है तो you have to take care for that like your baby throughout your life. Doctor, how can oral health be managed in older patients? You are talking about oral health of the teeth or oral without teeth. That is the two criteria in the old age. Okay, tell us both. See, when you have in the old age patient, you have a teeth. There is a weak periodontium in that area. So always you have to do a good brushing technique. As in weak gums. Weak gums. So you have to use a soft brush in that area. Okay. Soft brush with proper brushing techniques. Right? And use some mouthwash in that conditions. When you don't have a teeth, so means you have a complete missing teeth. Always go for a denture, removable. If patient is not willing for a implants. If the patient is not willing for a implants, go for a denture, but don't keep it without teeth. Any jaw without कोई भी jaw बिना दांत के will have a joint pain. पूरा बॉडी का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है. तो सबसे पहले बॉडी का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द जॉइंट. टीएम जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है. स्पाइन में स्पाइनल इश्यूज चालू हो जाता है. दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस. ठीक है. पोस्चर चेंज हो जाता है. आप ओल्ड एज देखोगे विदाउट टीथ और ओल्ड एज देखोगे विद टीथ, दोनों में डिफरेंस है. पोस्चर विल बी डिफरेंट. इसमें पूरा बॉडी में चेंज हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज मैंडेटरी टू रिप्लेस द टीथ व्हेन द पेशेंट इज ओल्ड एज विदाउट टीथ. You mean कि hunchback होता है बिल्कुल. हंचबैक होता है. And arthritis also. Yeah, you mentioned. that is, yes, spine issues चालू हो जाता है. So every patient should have a denture, old age, or if you don't want a denture, you can directly go for an implants. Denture का एक ही प्रॉब्लम है, वो बोन रिजॉर्प्शन बहुत करता है, ट्रॉमेटिक करता है. तो denture after 5-10 years, patient is not able to wear denture also. In that case, always go for a dental implants for lifetime. So you should never leave the oral cavity without. मैं पहले बोला there should be always replacement in the of the teeth. It's a disability, It's a na? disability. So disability or every disability should be covered. Otherwise, it will manifest to the other area of your body. So, we spoke about different ages and what are the treatment options that are available, how to prevent it. So nowadays, there's also a trend, and since you're also in the field of cosmetic dentistry. So can you tell us कि cosmetic dentistry में अब क्या चल रहा है? Like, See, cosmetically, dentistry means we are just correction. We are making a correction of the not only for the teeth. We are making correction of the jaw bones also. Okay. So it's not कि भाई smile designing करना है तो we just correct the teeth. The now advance is we correct the teeth as well as the jaw bone. आपका अगर jaw bone आगे है तो we do something called the osteotomy or the dentofacial corrections. Dentofacial corrections से हम jaw को पीछे लेते हैं. is it safe? It's safe. It's a small procedure. Under general anesthesia. This is the first part. Second part, आपके अगर teeth irregulars है, so we go for a braces or aligners. Okay, that is Invisalign, one of the brand. And the last thing, if you have some issues with your teeth, that is yellowish teeth, so we go for a bleaching. Or anything you want to change the size of your teeth, you can go for a veneers or the laminates or that teeth. अच्छा. So आपको जो भी फिल्म साथ देखते हो, maximum having a veneers in their teeth. So when it comes to teeth alignment, what is the most recommended option? See, braces, till the 20th century, there was the braces was one of the criteria. So controlled tooth movement was there, but with evolution of the technology, digital technology, nowadays हम अभी invisible type of flexible material use कर रहे हैं. That is called as aligners. It's like a tooth colored only. You have to just place it for 18 to 20 hours a day. 4 घंटे निकाल के रखना. So that will also cause the tooth movement and the correction. Any correction in the tooth movement in the physiological limit called as orthodontic treatment. Okay. तो करेक्शन करना है हमको, लेकिन एक लिमिट में करना है. तो जो स्लो करेक्शंस करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस कर सकते हैं आप, या फिर एक मटेरियल रहता है फ्लेक्सिबल टूथ कलर, उससे कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इन अलाइनर्स.
और जो अलाइनर्स लगाते हैं, यू मेंशन दैट यू हैव टू कीप इट फॉर 18 to 8 to 20 20 आवर्स, ईयर्स, राइट? ताकि टूथ मूवमेंट्स हो ना, टूथ आगे जाए या पीछे जाए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आपको कैसे। इट्स अ प्री प्रोग्राम्ड वन। आपको एक सेट दिया जाता है, 25 से 40 सेट दिए जाते हैं। एवरी 15 डेज और 1 मंथ यू हैव टू चेंज इट। So are there any risks in that? Does it affect the gums See, they are very if you're flexible, they are very having flexible and the tooth forces जो रहते हैं ना, वो physiologic limits में रहते हैं। So there will not any harm in the oral cavity or the teeth and the gums, unless it is governed by the doctor. So जो भी होता है digitally होता है, that the movement should be governed by the doctor. So what are the most common treatments that come to you? What are the most common cases in terms of cosmetic dentistry जो अभी trending है? Trending में आते हैं, most common come for the aligners, the correction of the teeth. Second come for the orthodontic surgery, the plus the correction the jaw bone. Third they come from the laminates, missing space spacing रहता है दांत के अंदर, they comes for veneers or laminates. Okay. And last one is for the bleaching. Any one wants to get married, they come for a bleaching and all. The whitening of the teeth, what we call that. What are laminates? Laminates are the layer of the cap crowns or the layers of the material, to a translucent material, which you place on the teeth, so that it should look nice, White. white and anatomical. Understood. And is it safe? Like, and how effective is it? कितने time तक See, if you go for a laminates, now you have to take precaution that you should not use a hard stuff. But if you go for a crown, zirconia crown or the Max crown, it will solve your problem. as in वो permanent है कि That is कितने permanent. time तक? That is permanent. It lasts. It lasts. Yeah. Okay. Is there any specific care that a patient should take when they have aligners or? The aligner should be monitored every monthly. If they come for a follow, they should come for a follow up. See how the tooth correction is there. कितना पीछे जा रहा है, कितना आगे जा रहा है. कुछ वहाँ पे कुछ और कुछ मेजर करेक्शन, मेजर इश्यूज हो रहा है कि टूथ पेन हो रहा है क्या. That all should be discussed with your doctor, dentist. Doctor, you spoke about digital dentistry. See, this is the area, the era of digitalized one. So dentistry also start from the manual one. Now it's increased up to the digital gone up. So everything is from the is now in dentistry digitalized. सब डिजिटल हो रहा है. स्टार्टिंग फ्रॉम द आप फिलिंग भी देखोगे तो फिलिंग के लिए भी एक मशीन आई हुई है, जो प्रोपोर्शनेट फिलिंग होता है, प्रोपोर्शनेट रेस पास होते हैं. आपका अगर रूट कैनल भी करना है तो प्रॉपर डिजिटल एक्सरेज होते हैं. डिजिटल मशीन्स आई हुई है जो कि आपका लेंथ फॉर्म करता है, रूट का कितना बड़ा है. आप पहले इम्प्रेशंस करते थे, अभी इम्प्रेशन भी स्टॉप हो गए, डायरेक्ट वीडियो स्कैन करते हैं. सो दिस ऑल मॉडिफिकेशंस आए हुए हैं. So what are the benefits of these modifications? Like, is it more precise, the technology? It's not only the more precise, it's the Hmm. patient comfort. अच्छा. तो प्रिसाइज patient तो है, comfort. पहले बहुत एरर्स होते हैं. व्हेन यू डू मैन्युअली देयर आर वेरियस एरर्स इन द व्हेन यू डूइंग द ट्रीटमेंट्स. बट नाउअडेज विद द era of digital dentistry, everything is precise and the comfort. AI भी यूज होता है Nowadays they are using AI also for flapless surgeries. We don't want to again open the flap. Implant placement के लिए we are doing it with the close. We are not opening. We are not giving any suture after What implant is placement. flap? See, आपके पास जब टीथ मिसिंग होता है तो उसको कवर गम से कवर होता है. दैट इज कॉल्ड एज फ्लैप बेसिकली. हाँ. ठीक है. तो वो फ्लैप को आप प्रिवेंट करते ही आपको इम्प्लांट डालना है. आपको उसको कट नहीं करना है. कट करने के बाद आपको सूचना नहीं करना है. कट करना पड़ता है, एक्सपोज बोन को एक्सपोज करना पड़ता है, फिर इम्प्लांट डालना पड़ता है. बट विथ एआई एंड द डिजिटल इरा, यू कैन जस्ट मेक ए गाइड ऑन द योर फ्लैप और द गम्स एंड पुट द इम्प्लांट जस्ट बाय द ड्रिलिंग, स्मॉल ड्रिलिंग. So it will prevent suturing and the post of pain and discomfort. And it will be precise monitored by your X-rays. तो हमने बात की about AI and digital technology. What about laser? Is laser also used? Like बहुत सारे surgeries में in other parts of the body laser is used. Is laser also used in dentistry? Yeah. Laser is now one of the non-invasive technique or the non-invasive surgical procedure जो हम कर रहे हैं. So two types के lasers आते हैं. One is soft tissue laser and hard tissue laser. Soft tissue lasers are used for the gums. Hard tissue lasers used for the removal of the teeth and the and the disinfecting your bone. Okay. यानी बोन इन्फेक्शन निकालने के लिए. अच्छा, इन्फेक्शन निकालने के इनके लिए भी लिए लेजर्स laser यूज is होते हैं. used. तो पेशेंट का मैंने आपको बताया था कि क्रोनिक जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस होता है. हाँ. So with the soft tissue laser, we can take care for this chronic periodontitis. Nowadays हम routinely flap surgeries कर रहे हैं with the lasers, so that आपकी gum strong होके चिपक जाए दांत के साथ में. So Once laser is laser is the one which can reduce the infection in the oral cavity. After root canal treatment भी we use a laser treatment. For every most of the treatment के साथ में we use as an assistant.
So so nowadays Yeah. dentistry is the laser assisted dentistry. You got Okay. my point? Understood. Yeah. Understood. So to remove any infection. Any infection, any to increase the healing, to take biopsies, we are using a laser. So it's a laser assisted dentistry now we call that. Okay. Yeah. So the major use of laser is to remove the infection Yeah, correct. that you're saying. Okay. Any other technology that is upcoming? Yeah. One is another is the piezo surgery unit. So removal of the bone was difficult with the drills. हाँ. तो पहले कैसा करते थे, जो बोन रिमूव करते थे वो ड्रिल से करते थे, कार्बाइड बर्स्ट से करते थे। हम्म. अभी कोई अल्ट्रासोनिक डिवाइस आए हुए हैं, उसको बोलते हैं पीजो सर्जरी यूनिट। सो विद द वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन वी कैन कट द बोन्स। देयर विल नॉट बी एनी, कभी वहाँ पे उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी और टिश्यू फ्रेंडली रहता है, तो बोन ज़्यादा नेक्रोज नहीं होता है, बोन खराब नहीं होता है। दिस ऑल मॉडिफिकेशंस इज गोइंग ऑन और बोन भी प्रिसाइज कट होता है। सो we should where to मैंने आपको पहले बताया, when you're treating the patient you should not only respect the patient, you should respect his tissues also, that is bony tissue and the soft tissue. So this advance in the equipments, जो नए एडवांसमेंट आ रहे हैं जैसे लेजर्स हो गया, piezo surgery units हो गया, this will respect the tissues, that is bone and the soft tissue, and will not cause the heat generation, जो आप गर्म नहीं होगा, तो डिस्ट्रक्शन काफी कम होगा. So we are substituting drills with the piezo surgery unit now Okay. and blade with the laser. Understood. Understood. So, doctor, we spoke a lot on cosmetic dentistry also, and I'm sure all of these tips would be very helpful. So, let's come to emergencies. So, baki in every field in medical in every medical field and specialization, we talk about emergencies. So, what are some dental emergencies जो आते हैं in dentistry? जैसे अपना पहले डिस्कशन हुआ था, तो एक्सट्रैक्शन का फियर है, तो मोस्ट पेशेंट कम टू अस विद ए फियर। तो जब वो डेंटल चेयर पे बैठते हैं तो बिकॉज ऑफ फियर ना, देयर इज सम कॉमन कंडीशन कॉल्ड एज सिंकोप। सो हम जब छोटा सा एनेस्थेशिया देते हैं, उसमें छोटा लिग्नोकेन में भी एड्रेनालिन रहता है, एनेस्थेटिक जेल रहता है और एक एड्रेनालिन रहता है, हाँ हाँ. ताकि हम ब्लीडिंग कम सके। उसके कारण एक मोस्ट कॉमन होता है सिंकोप। तो What is सिंकोप मीन्स आप चक्कर आता है पेशेंट को oh, डेंटल चेयर पे, दैट इज वन ऑफ द इमरजेंसी, बट दैट कैन बी मैनेज इजीली। हमको थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना पड़ता है, सब ग्लूकोज देना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, तो एवरीथिंग इज इन द हाउ यू काउंसिल द पेशेंट। सो वो एक सॉर्ट आउट होता है, वो कॉमन कंडीशन है सिंकोप। उसमें ब्रेन में एक्चुअली ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, बट विथ प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द डेंटल चेयर वी कैन मैनेज, दैट इज सिंपल थिंग। सेकंड इज ब्लीडिंग के लिए आते हैं पेशेंट, तो अभी काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स आ गए या फिर ब्लीडिंग ब्लीडिंग स्टॉप करने के एजेंट्स आ गए, वी कैन टेक केयर फॉर द ब्लीडिंग्स ऑल्सो। तीसरा इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद द पेशेंट कि भाई डेंटल ट्रीटमेंट पेनफुल है, सो जो सिरिंजेस भी इंजेक्शन एवरी मोस्ट ऑफ द डेंटल ट्रीटमेंट के लिए एनेस्थीसिया देना ही पड़ता है। सो नाउअडेज हमारे पास पेन फ्री नीडल्स आए हुए हैं, so we can use a pain-free needle for injections. So this all will create a phobia of not going to dentist. so There there is no should be no phobia. fear. There should not be fear for going to dentist. It's like you're going for a picnic. जाइए आपके आप बैठिए वहाँ पे, the dentist will do his work and just go back. It's very simple. And then you have to come back and do your job of taking care. Yeah, follow-up is always mandatory. Without follow-up, success of dental treatment is not there. Follow is always necessary. अगर आप कोई भी काम करते हो या फिर आपको फीलिंग करते हो, तो एवरी 6 मंथ 8 मंथ जस्ट कम फॉर चेकअप कि उसका प्रोग्नोसिस कैसा है, इट इज एक्सेप्टेबल योर बॉडी और नॉट, दैट यू हैव टू चेक। Understood. And any trauma cases जो आते हैं, or if someone has, if there's a dental trauma that has happened, any such case, so what would you See, recommend? Because as a maxillofacial trauma is our bread and butter, what you call as, but see, trauma is very easy to treat because bone है तो जुड़ना ही है, so we just assist our oral cavity bones to get aligned, that only we do. So we open it, we align it, we put some plates and close it so that it will get functional. And the main key what would differ from the other surgeons, that we adjust the occlusion of the patient, मीन्स दाँत का जो अलाइनमेंट रहता है वी एडजस्ट इट व्हेन द ट्रॉमा पेशेंट कम्स, दैट विल मेक इट समथिंग डिफरेंट। तो मतलब I पेशेंट को ट्रॉमा होता है तो उसका अलाइनमेंट नॉट ओनली बोन का खराब होता है, जॉ के साथ में दाँत का भी अलाइनमेंट चले जाता है बिकॉज़ ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द मैक्सिलर और द मैंडिबल। सबसे पहले हम उसको अलाइन करते हैं, उसके बाद में सभी बोन्स को फिक्स करते हैं। उसके बाद में देन द वी टेक ए फॉलो-अप एंड how the mastic. It's not only treating the bone, it's treating the entire maxillofacial area with the when the patient comes for the trauma. so what are some trauma cases that come to you as a maxillary?
Routinely, as a maxillofacial surgeon, we have a trauma of the injury of the jaw bones, especially maxilla, I mean jaw, upper ka jaw, lower jaw, Like because of what? because road traffic accidents are the most common for the this facial trauma. So any patient with the maxillofacial trauma can be treated with the close reduction or the open reduction, depending on the case. Plating कहाँ पे करना है नहीं करना है with proper occlusal settlements. Hmm. So, speaking of trauma and accidents, any first aid or something that can be done if you're present at the site? How can you help in terms of dental care? इमीडिएट ट्रॉमा पेशेंट शुड गेट स्टेबल. सबसे पहले होता है कि उसका एयरवे सिक्योर करो. सो विद ओरल विद एज ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन यू हैव टू सी सिक्योर द ओरल एयरवे बाय प्रॉपर क्लीनिंग द ओरल कैविटी विद द ब्लड. जो भी रहेगा ब्लड डेब्रिस रहेंगे टू रिमूव इट. जस्ट पुट सम अप्लायंसेस और इक्विपमेंट्स टू सिक्योर द एयरवे. ब्लीडिंग स्टॉप करना है. थर्ड, एक्टिव डिस्प्लेसमेंट है बोन का, तो जस्ट रिड्यूस इट दैट एरिया एंड जस्ट फायर इट. And make sure that the patient have a good airway. That's more important, and they should be conscious. That is the primary thing you can do it for that patient. So clean and Clean, think of stabilize, and the airway Sure. should be stable. And then obviously And the take stop, them to the hospital. yeah, and bleeding stop करना है because head and neck area जो रहता है, जो most muscular area में जहाँ सबसे ज़्यादा bleeding होता है, so that bleeding management should be proper. Otherwise, from the oral cavity it will go to lungs and cause the pneumonia or other issues. So airway secure करना is most mandatory In term in the trauma patient for trauma the first aid. for first aid. First aid, yeah. Okay. So doctor, we've I think spoken a lot on many topics. Any specific advice or any general tips that you would like to give our viewers? Any final advice? See, advices are always brush your teeth daily. That is the most common advice, though no one follows it. Yeah, no one follows. So I was just reading the statistic where, I think just 44% of people in India brush twice. I think you can brush thrice also if needed. That's a good thing because any debris in the oral cavity will cause some issues. That should be properly treated. That's it. And there's also this trend of breakfast in bed or brushing after breakfast. I don't know So you who had done recommend that. this? I don't recommend this. See, when there is no saliva at the night time, so there is a colonies of bacteria that should be removed in the early morning. So before going for any bed tea or bed breakfast, you always go for having some water rinse with the brushing and all. Otherwise, it always go to GIT tract or the digestive tract में जाके वो infection बढ़ता रहेगा. Again, oral cavity will be a source of your infection. So So brushing should always be done always first thing. done. Eat The lots of practice. drink lots of water. That is good thing when during the Mhm. bedside after the morning. Doctor, you also mentioned of the technique of brushing. So do electric toothbrushes जो अभी market में है, would you recommend electric toothbrushes? Does it help the technique? See, for the normal human being who can brush twice, no need of electric brush. But only for the medically compromised patient or the patient is having some medical issues who are not able to use the brush. In that case, only we recommend for the electric brush. For the routine human being or routine patient, we never recommend it. Right. And also Because forces are different in different areas in the oral cavity. Okay. So that should not be there. So you don't recommend No. electric toothbrushes? Okay. Only in few conditions. Like Alzheimer's disease or okay, where the patient where cannot physically brush patient by themselves. brush by themselves. And And it is of bedridden patients. is it recommended for children, like where they are not able to brush by See, themselves? the children are not doing the brushing with the normal brush, you can recommend it. That's not mandatory. Okay. Also, you mentioned that, in older patients, they should use soft bristle toothbrush. So, what is your thought on the bristle, like soft, medium? See, there are various types of bristles present in the market. The brushes, see, in the old days, there is wearing of enamel, that is layer. So, to prevent enamel from the wearing off, you have to use a soft brush with a circular motion so that there will not be a exposure and the sensitivity in their teeth. Does having tea, coffee in the morning affect your enamel? See, always this tea coffee causes staining over the teeth. Causes staining. Staining over the teeth. Staining होता है. Huh. So my take on this that if you have a bedside that tea or coffee, always rinse your mouth. Rinse after. So then it's fine. Then it's fine. If you rinse. No problem. Okay.
Okay, so I think Doctor, we've had a wonderful conversation. I'm sure कि आपने बहुत सारे tips दिए. I think that will help our viewers. So I'm really glad for this, for this entire conversation, about this entire conversation you had. And I think this is an episode that is important for everyone on how they should take care of their oral health, and how it affects how it affects general health, and how general health affects your oral health. So, yeah, I think we had a wonderful Thank you, conversation. Sarah. Thank you so much for Thanks a lot. this wonderful session with us. I'm sure it'll help all of our audience and our viewers. Thank you. Thank you. My last slogan is healthy smile, healthy face, and all visit the dentist. All, All should visit the dentist. all should visit the dentist. Yeah.